Good morning students. Topic of our today's class is proteins. So today we are going to talk about what actually proteins are. So before starting with proteins, I want to tell you that proteins are going to be the heteropolymers. अगर मैं polymer word use कर रही हूँ, that means these are going to be made up of small units, the monomeric units. So the monomeric unit of these proteins are going to be amino acids. So proteins are made up of amino acids. Lots of amino acids are going to attached with each other and they are responsible for the formation of proteins. So firstly we are going to talk about amino acids. What these amino acids are, what are the different characteristics of amino acids, how many different type of amino acids are there, and later on we will move on to proteins. So अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, then these amino acids are methane derivatives. Why we are saying these are methane derivatives? See, this is methane, CH4. Methane is CH4. So this is how I can represent a methane. Now, if I start replacing these hydrogen with different functional groups, that is going to result in the formation of amino acid. This is the central carbon that is present over here. Here one carbon is replaced by amino group, so NH2 is there. The second hydrogen is going to be replaced by a carboxylic group. One is going to be replaced by a alkyl chain. There can be long chain or you can say short chain, alkyl chain is present, so that is going to vary in each and every amino acid, and one is going to be the same hydrogen. So this is how a amino acid is going to be formed. This is what amino acid is. Now this, if we see this central carbon, this central carbon is a chiral carbon. Why I am using the word chiral carbon? Because different functional groups are attached with this carbon. So one is amino group, COH group, a alkyl chain and a hydrogen group. This is going to form a amino acid. तो हमें हर एक amino acid के पास एक amino group present है and one carboxylic group is going to be present. This is the characteristic feature of a amino acid. Now this alkyl chain, depending upon कि यहाँ पर कौन सी alkyl chain present है, there are different type of amino acids. अगर हम बात करते हैं amino acids which are responsible for formation of proteins, so there are 20 such amino acids which are involved in protein synthesis. So there are 20 different amino acids present हैं जो different sequence में proteins में arranged हैं. Other than this 20 amino acids, there are lots of other amino acids which are non-protein amino acids. Means वो body में different functions perform करते हैं, they are present in the organisms, लेकिन वो protein formation में participate नहीं करते हैं. So they are going to be 100 amino acids. They are non-protein अमाइनो एसिड्स जो डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसके अदरवाइज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक सिंपल एग्जांपल्स वी आर हैविंग ऑर्निथीन, सिट्रुलिन. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल दैट इज टेकिंग प्लेस इन लिवर. सो दिस इज हाउ दीज 20, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, अमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? द इंफॉर्मेशन फॉर द अमाइनो एसिड दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन mRNA. वी नो दैट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद द DNA स्ट्रैंड. DNA स्ट्रैंड के पास हर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकली कोडेड फॉर्म इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. नाउ दिस DNA इज गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द mRNA. DNA से क्या बनता है? mRNA बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन.
सो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी फॉर अ प्रोटीन, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर mRNA. जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कोडोन्स. Nitrogenous bases are arranged over here. 3 nitrogenous bases, they are going to form one codon. This is one codon, first, say second codon, third codon, and these arrows are, these are showing the nitrogenous bases that are present on the mRNA. So this is how sequential manner में mRNA के ऊपर कोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है एंड ईच कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अमाइनो एसिड. तो mRNA से जब ट्रांसलेशन होता है सो हर एक कोडोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो हेयर अमाइनो एसिड इज गोइंग टू प्रेजेंट लाइक दिस वे एंड दिस इज हाउ अ पॉलीपेप्टाइड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. ये जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बनता है. इस चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स. रीजन, अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं. वी विल टॉक अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो, हाउ दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म. So if chain of amino acid is there, that simply means lots of peptide bonds are there. That's why we are using the word polypeptide. So this is how amino acids are responsible for the formation of polypeptides. और कितने amino acids polypeptides बनाने के लिए responsible होंगे? 20 amino acids are responsible for the formation of amino acids. इन अमाइनो एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की वजह से डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स, लाइक सिंपल एग्जांपल इज वी आर हैविंग प्रोलीन. प्रोलीन इज अ अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोलीन इज हाइड्रोक्सी प्रोलीन. दैट मीन्स दैट हैज डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रोलीन. सो सच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. Now if we see few examples of the amino acids, so the simplest amino acid, here a COH group is present, a H is there and R, the alkyl chain that is having H. So that is going to, यहाँ पर R की जगह क्या प्रेजेंट है, H है. दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज नोन एज ग्लाइसिन. सो ग्लाइसिन इज हैविंग जो साइड चेन प्रेजेंट है, एट दैट साइड चेन ओनली हाइड्रोजन इज देयर. सो दैट्स व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट वन. अदर देन दिस देयर कैन बी अदर विच आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ओवर हेयर, लाइक मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हेयर. सो साइड चेन पे क्या प्रेजेंट है, अ मिथाइल ग्रुप इज देयर दैट इज एलानीन. और यू कैन से सम ऑफ द अदर, अ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. CH2OH, a alcoholic functional group is there that is serine. So this is how हर एक अमाइनो एसिड में द साइड चेन इज गोइंग टू वेरी. बहुत ज़्यादा कार्बन की इलोंगेटेड साइड चेन हो सकती है. साइक्लिक साइड चेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैन बी देयर इन सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, they are depending upon that which type of side chain is going to be present in these अमाइनो एसिड्स. जो कायरल कार्बन है उसके साथ कैसी साइड चेन्स अटैच्ड हैं, दैट इज सिंपली शोइंग कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी. नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सो प्लांट्स आर गोइंग टू फॉर्म, दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स बाय देयर ओन. बट एनिमल्स में देर आर सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स.
जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट लिपिड्स ऑल्सो. सो हेयर ऑल्सो कुछ अमाइनो एसिड्स को एनिमल्स अपने आप से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. दैट सिंपली मीन्स body is going to require them, so we need to take from outside. When we are taking diet, our diet should be rich in those amino acids which are lacking in our body, and such type of amino acids are known as essential amino acids. So essential amino acids are those amino acids which are not synthesized by animals. And there are 7 such amino acids. There are 7 essential amino acids. Some of the examples are leucine, isoleucine, valine, and others also. Other thing is, the second term we are using is non-essential amino acids. Non-essential amino acids simply means which are being synthesized and they are not required to be taken from outside. जो हमारी बॉडी में easily synthesize होते हैं और जिनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Other than this, there are some semi-essential amino acids also. Now what these semi-essential amino acids are? Semi-essential amino acids simply means we are going to require, animals they are going to require to take from outside, but only at specific stages. Not all the time they are required to be taken from outside. सिर्फ कुछ stages पे ही उनको लेना required है. Like we are saying that for children arginine and histidine, they are semi-essential amino acids which are required by children. Adults, they are not going to require these amino acids. So at specific stages they are going to be required. Now we talk about different characteristics we are going to, depending upon which functional group is present, how side chains are present, we are going to divide these amino acids into different categories. Let's see what these different categories are. So we are having different type of amino acids. Neutral amino acids. Neutral amino acid simply means that equal number of negative and positive charge are there. Charge is coming because of the NH2 and COOH group. So यहाँ पर equal number of negative और positive charge present है, so that's why they are going to have neutral behavior. For example, glycine is there, alanine is there, these are going to be neutral. Just like this, we are going to have acidic amino acid which are having acidic property. So acidic property is present because of carboxylic group. Carboxylic group present होगा, amino ज़्यादा carboxylic group present होगा as compared to amino group. So more the carboxylic group present, it is going to show acidic behavior. So here more COOH group is present. Like acidic amino acids are glutamic acid, aspartic acid. These are going to be acidic. We are having basic amino acids. Basic amino acid simply means now there will be more amino group as compared to the carboxylic group. So that is going to provide a basic character.
For example, arginine, lysine, these are basic amino acids. Now other than this, there are some other type of amino acids also, like we are having sulfur containing amino acids. अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. एग्जाम्पल क्या है? वी आर हैविंग मिथ्योनिन एंड सिस्टीन. टू अमाइनो एसिड्स आर देयर विच आर हैविंग सल्फर इन देम. एल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, लाइक वी सो, हमने अभी देखा था दैट सीरीन इज गोइंग टू हैव द एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप. So, alcoholic amino acids which are having alcoholic functional group. Examples हैं हमारे पास, one is serine and the second one is threonine. Then aromatic amino acids are there which are having ring structures. जिनके पास रिंग्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सो सच एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, टायरोसिन. These are aromatic amino acids. Other than these aromatic amino acids, there are heterocyclic amino acids. Means a ring structure is there that is containing nitrogen. So a nitrogen containing ring structure is there. For example, proline, histidine. So these are some of the different type of amino acid depending upon कि acidic character है या basic character है, उसमें sulfur present है या hydroxyl group present है, aromatic ring present है या nitrogen containing ring present है. So this is how different type of amino acids are there, and according to their characteristics they are going to acquire different specific positions in the proteins. Now another characteristic of these amino acid is they are having ionizable groups. So अगर हम इसको different pH solutions पे dissolve करते हैं, so it can behave as Juiter ions. Juiter ions means the number of positive charge and the number of negative charge, like COO negative, NH3 positive. Equal number of positive and negative charge are going to be present, and at this time this is known as Juiter ion. It can behave as cation or anion also. Like if it is going to have positive charge, it is going to behave as cation, or if it is going to have only negative charge, it is going to behave as anion. So when we are going to dissolve it in solution, these amino acids, depending upon the type of functional group they are having, they are going to behave differently. They can behave as Juiter ions where equal positive and negative charge are present, or they can behave as anions, or they can behave as cations also. So this is another characteristic of amino acids. Now let's talk about proteins. I told you
the amino acids are going to be the monomeric unit of proteins. So बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच करके प्रोटीन्स बनाते हैं. प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए देर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स और दो अमाइनो एसिड्स के बीच में, एंड दिस इज हाउ दे आर combining together to form the protein. So let's see how this peptide bond is going to be formed. Say this is the COOH group of one amino acid. This is the alkyl chain, hydrogen. Here NH2 is present. I am showing this NH2 like this. Now this is second amino acid. This is hydrogen, COOH group. One amino acid, second amino acid. Now the peptide bond is going to form between COOH group of this amino acid and NH of this amino acid. Again this is a dehydration reaction in which OH of this COH group and H from this NH2 is going to be removed out in form of water. So water is going to be removed and they are going to combine together like this way. Sorry, it's a hydrogen. So now the bond that is formed between this CO and NH, this bond is peptide bond. This is one amino acid and this is the second amino acid, and these two amino acids, they have combined, they have joined together with the help of this peptide bond. So this is how peptide bond formation takes place between amino acids. अगर दो amino acids के बीच में peptide bond formation बन रहा है, that is known as a dipeptide. अगर तीन amino acids present होंगे, so two peptide bonds are going to be formed, that is known as a tripeptide. If four are there, tetrapeptide. If many, more than four are there, they are known as polypeptide. You can say approx, if we are counting almost 50 or more than 50, we are considering it as polypeptide. So amino acids are combined together and they are responsible for the formation of polypeptides, and later on these polypeptides are going to be responsible for the formation of functional proteins. तो पहले अमीनो एसिड्स की चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, देन देयर आर वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस they undergo, and finally they are responsible for the formation of functional proteins. So let's talk about proteins. We already told you proteins are going to be the heteropolymeric structures which are made up of amino acids. There are 20 amino acids which are responsible for the formation of proteins. Whether it is a prokaryotic cell, say E. coli is there, simple bacteria is there. So all these are having say 1000 to 2000 number of proteins are going to be present in a simple E. coli cell. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. ईच एंड एवरी दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर सेल. एवरी फंक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय दीज प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स का साइज वेरी कर सकता है फ्रॉम वेरी स्मॉल साइज टू वेरी बिग साइज ऑफ proteins. तो depending upon how many amino acids are present in proteins, the size of protein can vary. और प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स के कॉम्बिनेशन से. सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. अगर एक पॉलीपेप्टाइड रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के लिए, दैट इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन. मोनोमेरिक प्रोटीन मीन्स ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन
is going to be responsible for the formation of a protein. So only one polypeptide is involved. Like for example, we are having myoglobin. Myoglobin is a pigment that is responsible for the oxygen carrying in muscles. So that is made up of only one polypeptide. We can have dimeric protein in which two polypeptides are involved. Like simple one, insulin is there. So here two polypeptides are involved. Example is insulin. Insulin is a hormone that is going to lower down the blood glucose level, and that is made up of two polypeptides A and B. दो polypeptide chains present है. A is having 21 amino acids and B is going to have 30 amino acids. So total 51 amino acids present है insulin में, but एज अ होल प्रेजेंट नहीं है, वहां पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हैं. वन इज कैरिंग 21 एंड द अदर वन इज कैरिंग 30 अमाइनो एसिड्स. लाइक दिस वी आर हैविंग मल्टीमेरिक प्रोटीन्स. मल्टीमेरिक प्रोटीन्स मीन्स more than two polypeptide chains are responsible for the formation of a functional protein. दो से ज़्यादा polypeptides involved हैं. Example is hemoglobin. अगर हम hemoglobin की बात करते हैं तो total 4 polypeptide chains are there. 2 alpha chains and 2 beta chains. So they are going to be responsible for the formation of a functional protein. सो सिंपली एक प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा, इवन मोर देन 4 ऑल्सो. पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन बी प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोटीन कोडिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है. सो डीएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए. एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट है जो अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो हर एक प्रोटीन में sequence of amino acids present है and these sequence of amino acids are going to be specific for each and every protein. अगर हम एक भी अमाइनो एसिड के चेंज कर देते हैं उसकी पोजीशन से, so that is going to affect the functioning of a particular protein. So sequence should be specific for a specific protein. Now let's talk about the structure, level of organization of a protein. Organization, there are 4 level of organizations: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure of protein. Initially I am talking about primary structure. Primary structure of proteins means a simple structure of protein in which the amino acids, they are linked with peptide bonds. So here we will come to know that how many amino acids are combined together, how many polypeptide chains are there. So this is going to be a simple structure. Primary structure कब बनता है, जब simply mRNA amino acid की chain में कोड होता है, तो the first structure that we are getting is primary structure. अब बहुत सारे proteins में this primary structure is not going to be the functional protein. That means it is requiring lots of modification and after lots of modification it is going to convert into a functional protein. तो primary structure functional structure नहीं होता है, इसमें बहुत सारी modifications होंगी तब जाके ये एक functional protein में convert होता है. But there are some of the exceptions in which in this primary structure, in this sequence of amino acids also a protein start functioning. जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ही फंक्शनल होता है. सो यहाँ पर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं. अगर हम दो पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंस देखें देन इट इज गोइंग टू बी 0.35 नैनोमीटर एंड हेयर देयर इज वन एन टर्मिनल एंड वन सी टर्मिनल इज देयर.
N terminal means on the left hand side the NH group is going to be present, and on the C terminal on the right hand side the CO group is going to be present. So there is a long chain of amino acids, one is on N terminal and one is on this side C terminal is going to be present, and we can simply see how many number of amino acids and polypeptide chains are going to be present in this particular structure. उसके बाद modifications होना start होती हैं. So the second level is known as secondary structure. Secondary structure कैसे बनता है? Secondary structure is formed when this primary structure is going to start forming hydrogen bonding. जब जो प्राइमरी अमाइनो एसिड्स की चेन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होता है, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है नाउ अमाइनो एसिड्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, दे गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आएंगे. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. सो अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, so this is how the amino acids are going to be present in this helical structure. In red I am showing the amino acids. अब जो amino acids present है, this is the first amino acid, second, third and this is the fourth amino acid. So the first amino acid is going to have this CO group and fourth amino acid is having this NH group, and there is hydrogen bond that is formed between this CO and NH group. This is again next is going to form hydrogen bonding with the fourth. So this is the hydrogen bonding that is stabilizing this structure, and because of this hydrogen bonding the distantly located amino acids जो एक दूसरे से दूर थे, they are coming close to each other, in contact with each other. So this structure is known as a alpha helix. Just like this alpha helix, in alpha helix only one single polypeptide is involved. Another structure is also formed, that is a beta pleated sheet. This is how a beta pleated sheet is going to be formed. So in this alpha helix we will see that only one single polypeptide is involved. एक ही polypeptide के बीच में hydrogen bond formation होता है. But if we talk about beta pleated sheets, then these beta pleated sheets are involving two polypeptides, two or more than two polypeptides can be there, and hydrogen bonding. So these are the amino acids. Hydrogen bonding is going to form between amino acids of two different polypeptides. So it is not going to give a helical structure, it is going to be giving a sheet like structure. That's why we are using the word beta pleated sheets. Now the thing is कि जो दो polypeptides हैं वो एक दूसरे के parallelly run कर रही हैं या anti parallelly run कर रही है. Like if we are talking about parallel beta sheets, so we are having example of beta carotene, and if we are talking about anti parallel beta sheets in which two polypeptides are running anti parallel to each other, the example is fibroin of silk. In alpha helix also we are having keratin present in here, myosin, tropomyosin. So all these are having this secondary structure. And always remember one thing also, secondary structures पर जो protein function करते हैं, almost all these proteins are structural proteins. ये कैसे proteins होते हैं? फिर से keratin, myosin, tropomyosin, beta carotene, fibroin of silk, all these are going to be structural proteins. These are structural proteins. So in secondary structure we are having alpha helix, we are having beta pleated sheets. One another structure is also there, that is collagen.
Collagen is simply having 3 helically coiled strands. One helically coiled strand is present in alpha helix, and if we see the structure of collagen, we are going to get 3 helically coiled strands. This is how the structure of collagen is going to be formed. Now, next structure comes is tertiary structure. The third one is tertiary structure. Tertiary structure, it is formed because of more folding. ज़्यादा folding की वजह से tertiary structure बनता है. They can be spherical, round shaped. Most of the functional proteins जो होते हैं they are going to acquire this tertiary structure. और tertiary structure acquire करने के लिए they sometimes take help of certain proteins which are known as chaperones. Chaperones are required जो protein folding में help करते हैं. And this is going to form a 3-dimensional structure. So tertiary structure is a 3-dimensional structure in which जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती हैं, दोज हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स दे आर गोइंग टू मूव इनवर्ड. जो कोर रीजन है, सेंटर रीजन है, वहाँ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो आउटर पेरिफेरल रीजन प्रेजेंट होता है वहाँ पर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं. So how these tertiary structures are going to be formed? These are formed by exposing the active sites. Active sites को बाहर की तरफ expose क्यों करना है? Because these are the functional proteins and they are going to bind with specific substrate. किसी भी specific substrate के साथ bind करना है, so that specificity is provided by these active sites. और जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होंगी दे आर गोइंग टू फोल्ड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती हैं. एंड दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो प्रोटीन्स को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, एंड दे आर हेल्पिंग इन देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Quaternary structure is mostly shown by multimeric proteins. अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं देन कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. यहाँ पर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वापस से एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स बनाती हैं. सो दिस इज हाउ प्रोटीन्स आर हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर शोन बाय दीज डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Some of the proteins are functioning at primary level, some of the proteins are functioning at secondary or tertiary level. If we talk about this tertiary level, then this tertiary structure is stabilized by lots of different type of bonds. बहुत सारे different type of bonds present हैं जो इस tertiary structure को stabilize करते हैं. Like there is presence of covalent bonds, which are the more strongest. सबसे ज़्यादा strong bonds जो present है proteins में for the stabilization of the structure of proteins, these are covalent bonds. Two type of covalent bonds are there, peptide bonds and disulfide bonds. Peptide bonds, we have seen how these peptide bonds are going to form. Disulfide bonds कहाँ बनते हैं? Sulfur containing जो amino acids हैं, these sulfur containing amino acids are responsible for the formation of disulfide bonds. दो सल्फर के बीच में जो bond बनता है that is disulfide bond. Hydrogen bonds are there. We have seen hydrogen bonding also. So there is requirement of a oxygen is there, a hydrogen is there, and the bond that is going to form between them is a hydrogen bond. Then van der Waals forces are there.
ये वंडरवॉल बॉन्ड्स आर देयर, जो हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज गोइंग टू बी द वंडरवॉल फोर्सेस. से CH3, CH2, CH2. Over here also a bond group is present, and this is how between these non-polar groups the bond formed is known as van der Waals forces. Sorry, this is the hydrophobic bond. Van der Waals forces are formed between such type of functional groups. So they are going to be forming van der Waals forces, and another one are ionic bonds because of charge separation. They are going to form the ionic bonds. So these are different bonds which are responsible for stabilization of these tertiary structure of proteins, and this is how the structure of proteins are there. If we discuss about the properties of the protein, then proteins are going to have large number of variety. There are thousands of protein present which are having different specific amino acid sequence performing different functions. So large variety is going to be present. Second one is specificity, that proteins are very much specific in their function. जैसे कि हम enzymes की बात करते हैं, enzymes are proteins. So enzyme एक specific substrate पर act करते हैं, किसी दूसरे specific substrate को breakdown या you can say reaction में participate नहीं करेंगे. So they are always going to be specific in their function. That is another property of proteins. Next one is these are large sized molecules. We have seen these are मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं विद हाई मोलिकुलर वेट, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल. जितने बड़े साइज का प्रोटीन होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में. सो दे आर गोइंग टू फॉर्म कॉलॉइड्स. They are insoluble in water and they are going to form colloids. The next is their reactivity and permeation. They are having active sites. These active sites are responsible for the binding of specific substrate. Like example हम enzymes की बात करते हैं. So each and every enzyme is going to bind with a particular substrate और वो एक reaction को proceed करवाने में help करते हैं. There is reaction between antibody. Antibodies are also proteinaceous in nature. So these antibodies are going to bind with specific antigen and reaction is going to occur between antigen and antibody. Proteins, they are not allowed to pass through cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये इजीली पास नहीं होते हैं. सो दे आर गोइंग टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. सो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स अकर्स थ्रू द सेल्स with the help of endocytosis and exocytosis. Now they are amphoteric in nature. जैसे हमने अमाइनो एसिड्स में बात की थी, अमाइनो एसिड इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव एंड एंड अ नेगेटिव एंड. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हैं. तो अगर अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी एम्फोटेरिक. डीनेचुरेशन, जो प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को हम डिसेबल कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर और इफ़ यू आर चेंजिंग द पीएच. अगर हम कुछ केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं, देन द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड, अभी तक हमने जितने बॉन्ड्स की बात की थी, दीज बॉन्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड
the structure is going to be disrupted and that is known as denaturation. तो अगर optimum conditions के अलावा हम conditions को change करते हैं then protein structure can be easily denatured, and if the conditions again be retrieved then renaturation occurs and the original structure of protein is going to be intact. So this is how denaturation and renaturation is going to occur in proteins. These are some of the characteristics of proteins. Now let's see different types of proteins. On the basis of different characteristics, we have divided proteins in different types. So these are different type of proteins. First we need to discuss about the protein that are on the basis of shape. Shape के basis पे हम proteins को दो categories में divide करते हैं, fibrous proteins and globular proteins. Fibrous proteins means these are having thread like structure. Fiber thread like structure, तो एक या एक से ज़्यादा polypeptides present हो सकती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और मोस्टली जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दे आर हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इनमें, एंड दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. लाइक अभी हमने बात की थी, वी आर हैविंग केराटिन, myosin, tropomyosin, so these are going to be fibrous proteins. Globular means rounded structure is there, so mostly they are having tertiary or quaternary structure, plus these are functional ones. The proteins which are involved in different functions, those are going to be globular proteins. और अगर हम चेंज करते हैं टेम्परेचर या pH तो इनकी फंक्शनिंग इजीली अफेक्ट हो सकती है. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. प्रोटीन्स कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? एंजाइमेटिक प्रोटीन्स मीन्स द प्रोटीन्स विच आर फंक्शनिंग एज एंजाइम्स, या तो डायरेक्टली एंजाइम्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं और दे आर एसोसिएटेड विद एंजाइम्स इन देयर फंक्शन. दोज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाने में या मसल्स में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, दोज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. स्टोरेज प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, जो सीड्स में, एग्स में स्टोर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं, दोज आर गोइंग टू बी द स्टोरेज प्रोटीन्स. एग्जाम्पल्स आर ग्लोब्युलिन्स, albumins, these are structural proteins. Then on the basis of constitution, कैसे बने हैं? सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स आर दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के अलावा कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. दे आर नॉट कंजुगेटेड विद एनी ऑफ द एडिशनल ग्रुप. वो कैसे हैं? सिंपल प्रोटीन्स हैं. लाइक हमारे केराटिन इज देयर, हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर, दे आर सिंपल प्रोटीन्स. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब है amino acids are there, other than amino acid they are attached with some additional groups, like we are having ribonucleoproteins. तो proteins के साथ ribonucleotides are attached, deoxyribonucleoproteins, so deoxyribonucleotides are attached, so some additional group is attached. There are some derived proteins which are derived from either protein denaturation, for example proteoses. These are going to be the derived proteins. And the last one are on the basis of quality. Complete proteins, they are also known as first class proteins. Means that they are going to have all the essential amino acids. ये वो proteins हैं जिनमें सारे के सारे essential amino acids present होते हैं. और mostly जो animal proteins होते हैं, non-vegetarian diet is there, meat, milk, fish, these are going to be having these complete proteins. Incomplete proteins means second class proteins. These are going to lack in any of the essential amino acids. और plant से हम जो proteins लेते हैं, those proteins are इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जिनमें किसी ना किसी असेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है. सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव कैटेगराइज्ड दीज प्रोटीन्स. सो दैट्स ऑल फॉर प्रोटीन्स. In next class we are going to discuss about the next topic of this chapter.